तो यूनिट 12 वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वन। ठीक है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा सबसे ज्यादा जो एरियाज हैं आपका वो किस में है, यूनिट 12 के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी के यूनिट्स आपका छोटे छोटे यूनिट्स हैं, बट 12 वाज जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नाउ यूनिट सॉरी 11 आपका यूनिट 11 विच वी हैव डन। सो नाउ नेक्स्ट वन, behavior, human behavior and individual differences, employee behavior at work, diversity, theories of motivation and practical implication, role, its concept and analysis. Very interesting one. अगर किसी ने थोड़ा बहुत मैनेजमेंट पढ़ा होगा so he is going to enjoy this particular part. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. Which of the following statement are correct? Our statement are correct with reference to human behaviors and individual differences. ठीक, human behavior and individual differences. So human behavior which is generally get decided based on the perception. ठीक है, हमारा जो perception है, हम how we are building perception around the things. ठीक है, जैसे होता है ना that if you study the perception topic itself, so every individual they have uniqueness in their personality, their personality trait, they generally build their perception. ठीक है, so if you come to the perception process, we have 4-5 stages. आपका perpetual input, perpetual mechanism, output, then behavior, act आपका final. ठीक है, so that mechanism is something जहां पे how we see things, what are basically the motive of that person. ठीक है, perceiver, टारगेट एंड एनवायरनमेंट, दीज आर द एलिमेंट्स अंडर दिस वन। ठीक है, तो एक बार चलते हैं थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं आपका। ह्यूमन बिहेवियर इज एंटायरली ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस and can be predicted with accuracy? No, never. You cannot predict human anytime. ठीक है, humans को predict करना is impossible job. Individual differences have minimal relevances in organizational motivation strategies due to standardization. No, this is also not going to help you. ठीक है, so this is also wrong. Hawthorne studies support the idea that social factor and recognition are crucial to workplace behaviors. ठीक है, Hawthorne effect आपका Elton Mayo, the Western Electronic Company. So they did some experiments in the organization, and these experiments will generally help us to understand, like to increase the productivity. You cannot force people. You can understand people, and accordingly you can provide. Like that time, money was the major motivation for people, but slightly it got changed. But ये सारी चीजें आपका जो है वो आपका correct है, ठीक है. So the social man concept is considered incomplete as it overlook intrinsic work, motivations and organizational goal. 3 and 4 only. 3 and 4 means option C should be right answer for this particular one. ठीक है, C is the right answer for this. Very good. Next one. Which of the following are correct with references to human behaviors and individual differences? ठीक है, human behavior and individual differences. ठीक है, and you have to find out the correct statement. Why you guys are not answering, guys? ठीक है, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? चलो, personality, perception and values are classified as environmental factor influencing individual behaviors आपका. ठीक है, सो व्हाट आपका दीज आर नॉट एनवायरमेंटल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये क्या है आपका, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. इट शुड बी अ साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, एनवायरमेंटल इज समथिंग आपका सिचुएशन इन ऑल. ठीक है, कहाँ पे हम एक्ट कर रहे हैं, दैट प्लेस एंड अदर्स, दे जनरली कम्स अंडर द एनवायरमेंटल एक्सटर्नल. ठीक है, और you can have intrinsic and extrinsic, and these all are intrinsic. According to Kurt Lewin, behavior result from a dynamic interaction between the individual and their environment. So Kurt Lewin change theory और आपका personality theory that generally fit in this particular direction itself. ठीक है, manager can improve organizational cohesiveness by understanding employee personalities and behavioral pattern. 100% true. 2 and 3 means option C should be right answer for this particular one. ठीक है, so option C will be right answer for this particular one. Next one. Consider the following statement of Erickson's stage of psychological development and their parallel in the workplace context. Very very important one. ठीक है, तो ये theories आपका इस वाले यूनिट में, यूनिट 12 के अंदर they have given so many theories. ये theories बहुत ही interesting है. I'll try कि I'll come up with one concept ब्रह्मास्त्र session for this module B as well. तो जहाँ पे I'll give you some
ब्रीफ ऑफ दीज ऑल थ्योरीज और द अदर टॉपिक्स एज वेल, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बहुत आई फील वेरी इंटरेस्टिंग दीज टॉपिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट अभी एग्जाम का रिक्वायरमेंट्स है, तो ऑब्वियसली दोज विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट आपका December 1 वी विल बी गोइंग टू डिलीवर ऑल दीज पर्टिकुलर वन इन डिटेल। बट जो अभी हमारे दोस्त लोग जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, दे हैव वेरी लेस टाइम, so I'll come up with one concept summary for module B as well, ठीक है। most probably I'll record by tomorrow because C में थोड़ा सा 2-3 यूनिट्स आपके 2 यूनिट्स आई गेस रह गए हैं, ठीक है। first I'll cover that one, then for I'll record in single attempt for the entire module B आपका, ठीक है। तो that will help you to understand to build the basic theories or the basic concepts around these particular one। चलो बताओ क्या होगा दोस्तों। I'll show you the entire chart आपका, ठीक है, how this chart work and all, ठीक है। So first statement, the stages of generativity versus a stagnation in erections theory correspond to an early career employees efforts to the establish individual credibility and take initiatives. Generativity and stagnation in erection theory correspond to an early. No, no, no. It is not. First of all, it is not the early one. ठीक है? This is आपका the growth phase and all. ठीक है? During the initiative and guild stage, both children and employees develop a sense of ownership to their actions, such as unsuccessful can result in regret for misuse resources and all, ठीक है। Statement 2 is 100% right. आपका this is initiative and guild stage failures which lead to these kind of things, और आपका like they can have these kind of impact in this particular one, unsuccessful areas. Intimacy versus isolation deal with the ability to work independently without needing a social, it is आपका with needing social interactions or emotional bondings, that is must आपका of this particular phase. In the identity versus role confusion stage, failure to define one's unique contribution in workplace can lead to uncertainty about one's role in the organization आपका 100% true. Integrity versus despair stage relate to retirement age, employee who evaluate their career evaluate their career possibility experience fulfillment of with 100% true, ठीक है। So 245 means option B should be right answer for this one. Ericsson's stage of psychology, a human psychology, and आपका देयर पैरेलल यूजेस इन वर्क प्लेस, ठीक है। हाउ वी ग्रो इन आवर लाइफ, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, व्हेन वी ज्वाइन फर्स्ट आपका कैसा हमारा एक्सपीरियंसेस होता है। एज वी ग्रो, लेट्स से वी स्पेंड मोर टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, what is the psychology, or even the in general life also, once as we grow, so how it generally lead to our overall journey, ठीक है। this is the overall one, ठीक है। so आपका फर्स्ट 0 to 1 year, ठीक है, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, वर्च्यू आपका होप, descriptions. So please go through this particular one, that will help you to understand this particular theory, and the application in organizations is very very important one, हाँ, ठीक है। application of this particular one in organization is very very important one, ठीक है। योगेश सर, हाँ योगेश सर, अभी आपने इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया ना, समटाइम यू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल देन, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो सर व्हाट आई कैन डू कि लाइक ए वन सेट इज डन बाय द पीयूष सर आपका रिगार्डिंग द योर मॉड्यूल ए, वन अनदर सेट आई विल कम। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग रेगुलर कॉन्सेप्ट सेशन एज वेल एज द आपका MCQs, यूनिट वाइज MCQs एंड ऑल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस I will be providing you आपका free module wise mock. Do attempt those particular mock, re-attempt आपका, while once you will go through again and again ना, you will be able to memorize things आपका, ठीक है। So that what I can do, ठीक है। So थोड़ा सा इस पार्ट पे आप लोग काम कीजिए एक बार। ABM आपका this is the very new subject to all of us, ठीक है। और
like BFM I have done so many things, BRBL में दिशा मैम, ABM के लिए will, ABFM के लिए will have enough time, HRM के लिए will have enough time, but this is the only one. So आप लोगों को मतलब how you will score 50 plus, that content I'm providing you, just go through that, consume that particular one, and if you need any help you can connect on Telegram and all. ठीक है योगेश सर, चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट अबाउट वेरियस पर्सनैलिटी थ्योरीज. ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी थ्योरीज. सो लाइक दिस इज आपका द इड आईडी अकॉर्डिंग टू फ्रूड. ठीक है, सो इट इज आपका सिगमंड फ्रूड आपका, वेयर बेसिकली they have created a iceberg type. ठीक है, so we have 3 stages of the life. One is आपका ego. ठीक है, then we have आपका sorry, first one is id stage आपका. ठीक है, first one is id stage id, basically. ठीक है, id, then we have ego, and then we have this entire one is suppose that आपका super ego. ठीक है, it is आपका super ego stage. So basically how people they generally react at their different stages of life. ठीक है, it is something where we have some sort of immoral urge and all. ठीक है, जहाँ पे baseless चीजें आपके लोग करते हैं, छोटा बच्चा होता है others. ठीक है, then ego is a stage which lies between id and super ego. Super ego is a stage where they generally act according to the moral grounds. ठीक है, क्या सही है क्या गलत है ये सब understanding के साथ, and they know the consequences if they are doing something right or something wrong. So that is generally part of this particular one. ठीक है, so Sigmund Freud आपका who that was the person, and if you study the personality theories, this is one of the most famous personality theory in the world or management. ठीक है, so the id according to Freud operate based on the moral values and social norms learned through the culture. So now we all know this statement is wrong. It is आपका the statement is about the super ego. ठीक है, it is आपका the final stage आपका which is part of super ego. ठीक है, the ego play a regulatory role by balancing the unrealistic demand of id with constraint of external words. ठीक है, this is आपका true statement true. This is the mid stage आपका where we are having some sort of transition from id to id to your आपका the super ego things and all. ठीक है, so that is the one. ठीक है, trait theory said that personality trait. So when it comes to the trait theory, we have Gordon Allport. ठीक है, we have so many theories, but the most famous one is Gordon Allport trait theory, which has 3 trait आपका cardinal trait, secondary cardinal trait, central trait, and आपका secondary trait. ठीक है, so that's saved predominantly by the environment such as education and socialization. This is wrong. ठीक है, trait theory has said that personality trait are shaped predominantly by environmental. No, it has both आपका. ठीक है, intrinsic and extrinsic. ठीक है, intrinsic is something related to our family, our values, belief system and all. ठीक है, and extrinsic can be environment is one, but it is not a predominant one. So this is wrong. ठीक है, self concept आपका, self concept is given by I just missed that name. ठीक है, so self concept is related to how a person's personality got evolved. ठीक है, so basically it is based on the आपका observation. ठीक है, the real self and or the ideal self. A personality is a showcase in between these two. One is real self, what I am, and another one is आपका ideal self, what the role model, what I want to become. ठीक है, so when we act, we perform a combination of both. ठीक है, that is the one. ठीक है, so self theory as proposed, Carl Rogers, sorry, it is mentioned here, emphasis that an individual personality is shaped by how other perceive from them and more by the self perception. 100% true. This is 100% correct. आप क्या कह रहा है आपके emphasis that individual personality is shaped by how, नहीं, not आपका by how others perceive. No, it is by how himself perceive more than the self one. ठीक है, self perception is important rather than this आपका. ठीक है, so it is something what I think about myself or like what I am and what I want to become. ठीक है, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, not this one. ठीक है, this is wrong, sorry. Social learning theory, Albert Bandura again. So social learning theory आपका Albert Bandura, it is again linked with the how we
observe thing, observational theory, it is also known as observational theory, Albert Bandura. So consider reinforcement and punishment as a key mechanism through which behavior is learned and personality is shaped. True. According to psychoanalytic theory, psychoanalytic theory psyकोएनालिटिक थ्योरी आपका दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस आपका फ्रूड, ठीक है, दिस फ्रूड थ्योरी वाज साइकोएनालिटिक थ्योरी, ठीक है, सिगमंड फ्रूड आपका साइकोएनालिटिक थ्योरी. एंड अंडरडेवलप्ड सुपर ईगो, एंड अंडरडेवलप्ड सुपर ईगो मे लीड टू अ पर्सन लैकिंग मोरल जजमेंट एंड एंगेजमेंट एंड इंपल्सिव बिहेवियर आपका अगेन 100% ट्रू, ठीक है. सो अब देखो यार, इसके लिए ना यू नीड अ सॉलिड स्टडी. दे आई हैव ट्राई टू इंक्लूड, मतलब 5 थ्योरीज आपका जो है ना पर्सनैलिटी की. आई जस्ट ट्राई टू समराइज ऑल दोज थ्योरीज विद वन क्वेश्चन, बट यू नीड अ स्टडी अराउंड दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है दोस्तों. चलो, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सेकंड आपका 5 and 6, सेकंड 5 and 6 ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस, करेक्ट है. तो ये थोड़ा सा स्टेजेस आपका, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज अराउंड दीज पर्टिकुलर वन. अब आप लोग में से कोई सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे पढ़ी. एक्चुअली आई यूज्ड टू टीच आपका मैनेजमेंट फॉर द ग्रेड बी पीपल, ठीक है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. तो वहां पे वी हैव अ गुड वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, और इवन फॉर सेबी और द अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो. तो इसलिए ये सारी चीजें याद हैं आपका, ठीक है. मैनेजमेंट आई यूज्ड टू टीच आपका, ठीक है, वहां से जो रहेंगे, ठीक है. हाँ योगेश सर, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. इफ यू आर कंज्यूमिंग थिंग्स ना, आई कैन मेक श्योर, मतलब वॉट एवर आई एम डिलीवरिंग. देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, आई हैव डिलीवर्ड दीज 5 स्टेटमेंट. आप लोग क्या करते हो, यू कट शॉर्ट. आपका आपने इसमें से 2 अपने हिसाब से एलिमिनेट कर दिए, रिमेनिंग 3 आपका रख लिए. दैट कंटेंट आपका देखो अभी इतना कम समय है कि आई एम ऑलरेडी समराइजिंग थिंग्स आपका, एंड दिस इज द थिंग्स, दिस इज अ मिनिमल रिक्वायरमेंट आपका, ठीक है. वो ब्रह्मास्त्र के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो या अदर्स हो, दैट इज द काइंड ऑफ मस्ट थिंग. सो इफ यू वांट टू एनी सॉर्ट ऑफ आपका जो कटिंग फटिंग वाला चीज है ना, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है. तो आप थोड़ा सा फोकस हो गया, एटलीस्ट जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए बेस्ट आपका. एंड बिलीव मी गाइस, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना इज द बेस्ट थिंग, अदरवाइज ये हमेशा लटकता रहेगा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. देन नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी से आगे थोड़ा सा, मुझे खाना बनाना है अभी, ठीक है. सो आज संडे है तो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खाना बनाने की. आई हैव टू कुक जस्ट आफ्टर दिस वन, सो इट विल लाइक लेट्स से बाय 9:30 वी लीव दिस क्लास और 10 o'clock. So then 2 hours it will take for the cooking and all, ठीक है. So everyone, I hope you guys are enjoying things and all, ठीक है. करेक्ट है. हाँ अच्छा अच्छा, हाँ योगेश सर, जस्ट डू पिंग मी ऑन टेलीग्राम, विल स्पीक. एक बार मैं आई शेयर माय नंबर. So just I guess you have already sent me some messages now. Just ping me on Telegram. I'll try my best to help you out in this particular case. If it is your 5 attempts, so this is like I'll feel very responsible in this case. Please do ping me on Telegram. We'll speak at least आपका. We'll have one discussion. So we'll try to help you out with this particular one for sure, sir. चलो. Consider the following statement. The brain Hempstead and Holland's personality job fit theory. Yeah. Again one another theory of the personality, and which is given in your book in detail, ठीक है. पहला, the left hemisphere, मतलब ब्रेन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं पर्सनैलिटी का, ठीक है, of the brain is primarily responsible for spatial and muscle abilities. आपका नहीं, गलत है नहीं आपका, ये राइट ब्रेन के उसमें होते हैं, ठीक है. दिस इज रॉन्ग. The right hemisphere control the right side of the body and dominate the logical things. ये आपका left side में होना चाहिए. We have to reverse the game आपका, ठीक है. Then electrical stimulation of the brain, electrical stimulation of brain can be used to reduce stress and simulate the creative thinking. 100% true as per their theory and all. According to Holland's, enterprising personality type prefer प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्टिविटीज, एक्वायरिंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस आपका, ठीक है. क्या कहते हो आपका, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द हॉलैंड, एंटरप्राइजिंग प्रेफर टू द प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन. क्या होना चाहिए था इसमें आपका? इट शुड बी आपका वर्बल एक्टिविटीज, नॉट प्रैक्टिकल आपका. इट शुड बी वर्बल, as I can recall this one. The social personality type in Holland theory is characterized by the cooperativeness, friendliness and interest in helping others. आपका 100% true, ठीक है. So 3 and 5 only. 3 and 5 means option C should be right answer. Yes. ठीक है. तो statement 1 is false.
spatial and muscle abilities are linked with the right brain, ठीक है, right side of the brain, ठीक है. Statement 2 आपका right hemisphere control the left side of the body and logical reasoning is mainly at left hemisphere functions, ठीक है. Fourth one was wrong. Enterprising having the vertical activities, sorry, verbal activities influencing others. आपका ठीक है. So these are the areas. So this is the overall आपका the 6 points which are generally part of this particular theory, ठीक है. So आपका realistic और dior, then we have investigative or thinker, artistic or creator, we have conventional, and we have entrepreneurs, and we have social helpers and all, ठीक है. So Holland 6 personality type आपका and based on the brain structures and others which is generally mentioned here, right? Alright guys, चलो next one आपका next question. Which of the following statement about the diversity management and gender issue in workplace are true? ठीक है, diversity management and gender issues at workplace, and you have to find out the true statement. ठीक है, क्या होगा correct answer? Anyone who want to answer this question, guys? First one आपका traditional HR system promote workplace homogeneity by selecting candidates similar to existing employees, often resulting homogeneous reproduction. True. Diversity sensitivity approach aim to increase the demographic diversity and organization by changing the composition through the hiring practices. Not demographic diversity. आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए आपका, ठीक है. इट शुड बी आपका ह्यूमन एंड कल्चरल, इट शुड बी लिंक विद दिस वन. डेमोग्राफी इज नॉट गोइंग टू हेल्प. The Equal Remuneration Act 1976 mandate equal pay for men and women, similar work, prohibit gender discrimination. True. 1 in 3 means आपका option A should be right answer for this one. Diversity sensitivity focus on cultural understanding and training, not demographic compositions. So that is the wrong answer and wrong statement which was given in this particular one. Next one, guys. Scientific management and human relation theories, very important one. ठीक है, scientific management Fred Fiedler, ठीक है, sorry Friedrich आपका, ठीक है, and human relation where we have Maslow's hierarchy of need, आपका Elder ERG theory, we have Douglas McGraw theory X and Y, ठीक है, and scientific management where we have आपका Taylor, sorry, ठीक है. So Taylor's आपका scientific management theory. So science, you apply science, not the thumb rules. He was the very first person who come up with these kind of things and all. It is part of the classical theories of management. Just आपका post industrial revolution, while we start globalizing, countries start connecting with each others and all. So basically, during the industrial revolution, the focus was machine. ठीक है, how we can increase and enhance productivity by the help of machine. But now, during the classical theories, we to increase or enhance the efficiency or productivity, we come up with some other thought like this scientific management theory. We should scientifically make decision in the organization. It is about the division and subdivision of task, training people scientifically, or deciding processes scientifically, and all those kind of things. Okay? So Taylor scientific management assumed that the primary motivation drivers for worker is money. Intrinsic satisfaction derive from the mastering a scientific design task and all. No, it was आपका in this particular case ना, during that particular period, so it was majorly money आपका, ठीक है. So like he clearly said that कि like there was one principle which was published by Taylor was आपका it is around the fair days pays for fair days work, ठीक है. So fair days pays for fair days work, and that is motivation primarily driven by the money. So that was the clear-cut statement. So let's make this statement wrong. According to scientific management, the ideal worker behaviors are to strictly follow prescribed work method identified through time and motion or science studies to maximize efficiency with the economic incentive reinforcing compliances. 100% true. Statement 2 is 100% right. Elton Mayo, आपका human relation model, emphasis that while social and psychological need are important, monetary compensation is irrelevant. No, this is आपका, it has relevancy,
and sustaining worker motivation. No, it was, he did not mention that the core of this Elton Mayo's Hawthorne effect was when people feel valued, if you give good working condition, if you recognize the efforts of people in the term of money, achievements and all, they become more productive. Okay, so this is wrong आपका, ठीक है. The human relation model argue that management attentiveness to informal group dynamics and interpersonal relationship is a crucial to achieving higher productivity even when formal organizational structure remain unchanged. आपका 100% true. This was part of their आपका experiment. They generally conducted one आपका bank wire test in the organization. What they did, they generally start speaking with peoples of that particular from the different groups. What they generally found कि people or the organizational informal group, they have their own targets. ठीक है, let's say there is a, आपका जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, सो हम एक ग्रुप हमने बनाया, 10 लोगों ने, एक टीम का इनफॉर्मल ग्रुप है, एंड दिस ग्रुप हैव डिसाइडेड कि वी विल प्रोड्यूस in a day 100 unit. ठीक है, let's say 10 people are working in this group, we are going to deliver 100 units. This is the group target which is informal, and 10 people, that means one person will deliver आपका 10 यूनिट ओनली. ठीक है, सो पर डे हम लोग क्या करेंगे, 10 यूनिट करेंगे, उसके बाद अपना काम रोक देंगे. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप जो प्रोडक्टिविटी को रोक रहे थे आपका, एंड विच वी गेट टू नो आफ्टर दिस काइंड ऑफ आपका एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल. ठीक है, कि इनफॉर्मल ग्रुप दे इन्फ्लुएंस द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव टू decode them, right? So that was the outcome of this particular one. Correct है, statement 4 is right. Statement 5 आपका, both scientific management and human relation theories consider the acceptance of managerial authority is essential, but differ fundamentally, because former relies on economic rationality and the later means आपका this Hawthorne effect depend on the social psychological factors and employee infusion. True, ठीक है, 100% correct. So 245 means option C should be right answer for this particular one. Clear है guys? Yes. So statement 1 and statement 3 was false. Rest all are correct. ठीक है, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. Why you guys are not answering? ऐसा इतना heavy भी नहीं है. Evaluate the following statement about Maslow's hierarchy of need and select the correct combination, true or false. ठीक है, अब बताओ. Maslow's hierarchy of need तो ये सबने सुना होगा. I believe that everybody knows about this. So Maslow's hierarchy of need. Who will tell the right answer for this one? So what Abraham Maslow did, he generally provided a pyramidal structure. ठीक है, this is part of the neoclassical theory of management. We have these areas. ठीक है, these are the need आपका. ठीक है, he categorized human need among the 5. First one physiological basic requirement, रोटी कपड़ा मकान. ठीक है, then safety आपका. ठीक है, then आपका social which is also known as love and belongings, then आपका esteem, and the final one is self actualization. First suggestion to all of you, there might be one question around this sequence आपका. ठीक है, sequence के अराउंड आपको क्वेश्चन मिल सकता है. So आपका physiological, safety, love and belongings, and this is the one. ठीक है, what he suggests basically, Abraham Maslow, he said कि as a manager first you have to find out the need of the person. ठीक है, the basic requirements, and fulfill the basic need and then motivate them to achieve the higher level need. Let's say in your organization there is a person who belongs to आपका social safety need. That means this is the basic requirement of this person. ठीक है, safety need आपका. So you as an organization you have to fulfill the basic need and you have to give some sort of motivation कि as of now we are fulfilling this one. If you put this much of additional effort, you will be able to shift from here to here. What he suggested, organization should work upward, and a good organization will focus on upper 2 level needs and all. So that was the part of this one. ठीक है, so now चलो आपका physiological need include desire for a job security, pension scheme in an organization. No, these are related to basic roti kapda and makan आपका. ठीक है, so first statement is wrong. According to Maslow, self-actualization need can only be pursued after fully satisfying psychological,
safety, social and esteem in order. No, it is something, we do not have, there is not necessarily everyone going to have this particular आपका sequence. There are some people, those who generally move from आपका base, let's say आपका social to esteem, और social आपका love and belongings to directly आपका self actualization. ठीक है, the direction should be upward, ठीक है, first of all, but there is not necessarily it is going, every individual is going to follow those steps and all. ठीक है, पहली चीज, self actualization is something what I can achieve best in my capacity, that is self actualization. ठीक है, every person they have a, like, this is the thing what I want to achieve in my life. तो that can be after any stage आपका. ठीक है, हर एक person के ऊपर depend करता है. This is also wrong. Social need in organization are mainly fulfilled by informal groups, peer acceptances or friendly social need आपका love and belongings. हाँ, statement 3 is correct आपका. Social, which is something linked with your love and belongings, so that generally are around this one. ठीक है, so where people they go for आपका family relationship and all. ठीक है, so there if you are adding more people in your life, your expenses will increase. So to meet those expenses आपका you have to make some arrangement, like people want to buy cars, आपका houses and all these kind of things. Then we have thwarting a self-esteem need can lead to feeling of inferiority and helplessness. बिल्कुल correct है, अगर नहीं पूरी हो रही है तो. Safety need in the workplace are unrelated to salary increase. No, it is related. आपका सेफ्टी में ऐसा नहीं कि मतलब पीपल वांट कि यार आप उनका जॉब कट ना हो. आप ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख में हायर किया था, कल के डेट में you did some cost cutting and you decrease their salary. No, they want to maintain that 1 lakh, or they want increments, not the decrements and all. Maslow's theory perfectly operationalized concept like self actualization, making it easy for researcher to measure आपका. ठीक है, statement C. देखो ये आपका it is not a kind of things which is fit to all situation. I'll not go for this one also. Some individual may skip lower level need and pursue self actualization directly, such as artist and all. बिल्कुल होते हैं ऐसे साधु संत लोग. ठीक है, so 347. अच्छा, what we have to find out correct and आपका, तो right आपका है 10. ठीक है, 3 आपका right. पहले क्या लिखे हैं, right लिखे हैं क्या, नहीं, ये क्या है आपका करेक्ट असेसमेंट. ठीक है, सो 347. हाँ, 347 राइट आपका, 347. देन आपका 1 2 5 6 आपका रॉन्ग. तो डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर. समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? प्लीज डू लेट मी नो एंड वेयर दीज आर पीपल आर गोइंग. ठीक है, आई होप यू गाइज गेटिंग दीज पर्टिकुलर थिंग क्लियरली. अगर कोई ऐसा डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट बताइएगा गाइज. ठीक है, आप लोगों को चैट क्यों नहीं दिख रहे मेरे को? अच्छा ओके, चलो ठीक है, नो वरीज. यस एवरीवन गाइस, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय साइड राइट? कुछ ऐसा गड़बड़ है क्या? आई कैन ओनली सी 1 or 2 people in the session, or else there is any issue. Can somebody please confirm? Somewhere it is, somehow it is showing 29 and then it is fluctuating. एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा. ठीक है, अगर कोई ऐसा इशू है. ठीक है, so this is the chart आपका. ठीक है, you can quickly go through this one. हाँ, योगेश सर इज सेइंग आई एम ऑन डिनर. ठीक है, चलो आप सर, आपका डिनर हो रहा है, मेरा भी डिनर बनना है. ठीक है, नो इशू. ओके, अलका मैम इज सेइंग नो इशू. चलो ठीक है, देन विल कंटिन्यू दिस. वी विल हैव वन मोर सेशन. ठीक है, नो वरीज, बट आई डू नॉट वांट टू स्किप द डिस्कशन. डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज द पार्ट ऑफ डिस्कशन विल हेल्प यू टू रिकॉल थिंग्स और द अदर वन. ठीक है, इसलिए मैंने कल का गैप रखा हुआ था. आई नो दिस थिंग विल हैपन. सो विल हैव वन मोर सेशन अराउंड द मॉड्यूल बी. आज एक हम लोग डिस्कशन कर लेंगे. कल जो रिमेनिंग यूनिट है आपका, जैसे 14 15 16, सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, नो वरीज. ठीक है, बट विल डिस्कस थिंग्स इन आपका डीप, तो जिससे कहीं ना कहीं वी कैन बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन ऑल. So psychological need आपका basic requirements, then safety, love and belongings, it is also known as social need, esteem and self actualization. So these are the areas which are generally part of this particular one. Correct है? चलो next one. Evaluate the following statement about Heisenberg two-factor theory and choose the
राइट ऑप्शन आपका। तो हेजरबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है। सो एज पर हेजरबर्ग, we like people's motivation is driven by two things. One, we have motivators, and there are some things which is called आपका which is आपका hygiene factor, ठीक है, hygiene factor. And we as an organization we have to balance between these two. Motivators आपका like आपका achievements, promotions and all, ठीक है, challenging tasks. These are the motivators which directly motivate a person's which generally directly increase the morale of a person, ठीक है. आपका hygiene factor, they do not have direct link with the motivation, but they can be a reason for the employee demotivation. Like आपका, let's say if we do not have good working conditions, आपका people will get instant dissatisfaction. If you have good working capital, that is not a reason for the motivation, because everybody does, ठीक है. Let's say salary is आपका hygiene factor. If as a PO I'm working with some organization, every PO is getting same things आपका, ठीक है, that is not a motivation for me. But as a PO, other person is getting, let's say 70,000, I'm getting 30,000, that will be a reason for the dissatisfaction, or that dissatisfaction will lead to the demotivation. So this is something around this particular area, right? तो यहाँ पे आपका हेजरबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर कौन से, मोटिवेटर्स एंड आपका hygiene they become reason for the dissatisfaction, and that dissatisfaction lead to the demotivation. So the presence of motivational factor is necessary to prevent job dissatisfaction आपका. First of all, the very first question which is statement is wrong. The presence of motivational factor is necessary to prevent job satisfaction होना चाहिए था आपका, ये पहले स्टेटमेंट ही गलत है पूरा. Hygiene factor primarily related to physical and social environment of the workplace. Not only physical and social environment, it include आपका जैसे as I said salary, आपका company policies and all, they are generally around this particular, ठीक है, not only about the social and environment, ठीक है. खाली अच्छा ऑफिस होने से काम नहीं चलेगा, we need good policies also, we need good salary also, that is hygiene. According to Heisenberg, eliminating hygiene factor will automatically increase employee motivation आपका, ठीक है. Eliminating means आपका here, if you fulfill, like if you have clear cut policies, clear cut salary, equal salary, equity and all, that is going to help. Heisenberg study suggested that job satisfaction and dissatisfaction are important construct, not simply opposite आपका, ठीक है. Statement 4 is also correct. ये they have a direct link आपका, and ऐसा नहीं कि जैसे salary आपका एज ए गिवन, इट इज अ फैक्टर ऑफ आपका हाइजीन फैक्टर. इट कैन बी, it is not directly linked with your motivation, but indirectly it can impact your motivation level of the employees, ठीक है. Recognition and advancement are example of hygiene factor. No, it is, these are the example of motivations, not the hygiene factor. 3 and 4 only guys, 3 and 4 नहीं, गलत है फिर हमारा आंसर. Recognition and advancement are example of hygiene factor that employee at, no, this is 100% wrong आपका. What we have to find out, true statement आपका, ठीक है. तो क्या होना चाहिए आपका true statement? ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मुझे इतना समझ में आ रहा है, ठीक है. So your answer should be आपका these two, 3 and 4. 3 and 4 we don't have ना. Okay, एक बार देख लेते हैं. Yes, देखो नहीं, हाई, थोड़ा सा एक बार देखते हैं. सो स्टेटमेंट 1, बिकॉज मोटिवेशनल फैक्टर क्रिएट सेटिस्फैक्शन बट देयर एब्सेंस डज नॉट कॉज डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है. अच्छा, स्टेटमेंट 1 वाज करेक्ट. प्रेजेंस ऑफ मोटिवेशनल, नहीं, इनकरेक्ट है आपका, ठीक है. स्टेटमेंट 2, हाइजीन फैक्टर प्राइमरली रिलेटेड टू फिजिकल और सोशल. हाइजीन फैक्टर रिलेटेड टू जॉब कॉन्टेक्स्ट सच एज वर्किंग कंडीशन. अच्छा, ओके. स्टेटमेंट 2 आपका interpersonal relations, that is the part. Okay, this is the right one. If this is right means 2 3 4 2 3 4 2 3 4 भी तो नहीं है हमारे इसमें. 4 is wrong, नहीं, 4 is correct here. 3 आपका because removing hygiene factor only prevent dissatisfaction. 5 आपका since recognition and advancement are motivational factor. कुछ ना alignment में गड़बड़ है आपका, otherwise that explanation is fine. 1 3 and 5 आपका, ठीक है. 2 and 4 are correct. Please go through this. So hygiene factor when it comes to the motivation,
So these are the motivators, ठीक है, who generally motivate people in the organization. Achievement, interest, responsibility, advancement and all. And these are the hygiene factor like salary, conditions, policies, supervision, relationship. Please do remember these factors आपका. There can be one direct question कि which of the following is not a hygiene factor or which of the following is not a आपका मोटिवेशन फैक्टर. तो व्हाट पीपल विल डू, जो जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे, दे आपका इंक्लूड सैलरी इन मोटिवेशन, ठीक है, पर्सनल बायस होगा वहां पे, ठीक है. सो वी विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर वन इन दिस वन, तो वो गड़बड़ हो जाएगा. तो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन. नेक्स्ट वन, ईआरजी थ्योरी आपका एंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है. ईआरजी आपका इट इज गिवन बाय दी it is Elderfer. Elderfer was the person. ERG theory is kind of, it's a summary of आपका that Abraham Maslow's theory of need. जैसे Abraham Maslow का this pyramid which include 5 areas आपका physiological, आपका physiological basic requirement, then safety, then आपका love and belongings, esteem and self actualization. What Elderfer did, उन्होंने क्या किया, इसको समराइज कर दिया. These two comes under आपका E, existence, this comes under relatedness and these two comes under the growth phase, ठीक है. This is known as ERG theory. What else he added in this particular theory, उसने भी बोला कि things should move upward आपका, but sometime when employees they won't be able to achieve existence to relatedness, they entered into a phase of आपका रिग्रेशन, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं व्हेन दे वोंट बी एबल टू अचीव द हायर ग्रोथ एंड ऑल. तो दैट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. ERG theory suggests that if an individual fail to satisfy growth needs, they will intensify their efforts to fulfill the related need and all, ठीक है. So क्या होगा करेक्ट आंसर इसका आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है. सो fulfill the related needs, मतलब they will start focusing on that particular area, ठीक है. जैसे if a person is here, अगर वो उसको नहीं कर पा रहा तो first he'll keep working on this one कि यहाँ पे हम और कैसे ज्यादा चीजों को कर सकें, so we can move. According to achievement motivation theory, then I just forgot the name of this theory is the need for affiliation. अच्छा okay sorry, it is आपका McClelland आपका, ठीक है. So McClelland who come up with the achievement motivation theory. As per the McClelland, we have three need आपका, need for affiliation, need for power and need for affiliation, power and need for affiliation, power and need for achievement, ठीक है. need for achievement marketing managers होते हैं basically, ठीक है. We as per McClelland we have three type of need for power, need for achievement and need for affiliation. So accordingly we have to basically like first we have to understand the people need and accordingly we have to place them in the different departments, ठीक है. So according to achievement motivation theory, the need for affiliation is primarily driven by desire to gain monetary rewards. Affiliation means आपका building relationship and all, ठीक है. So how people they generally build their relation with the other members and all, ठीक है. It is not driven by the money. Achievement वाला is driven by the money, जैसे सेल्स मैनेजर होते हैं वो आपका, ठीक है. दिस इज रॉन्ग. Elderfer ERG theory merge Maslow's 5 level into 3 broader categories but retain the strict hierarchical structure आपका no, ठीक है. दिस स्टेटमेंट यहाँ पे we have regression phase also, ठीक है, जब लोगों का नीड फुलफिल नहीं होता है. Employee with high need for power in achievements motivation theory focus more on controlling others, ठीक है. Need for power, हाँ, need for power means a person who want more power, who want कि he'll be able to handle a team and others, these kind of things, true. ERG allow for simultaneous operation of multiple need, unlike Maslow's model which instead on sequential progression and all, ठीक है. Again आपका this is also correct, ठीक है. So what will be your correct answer? 145. 145 means आपका D will be right answer, ठीक है. हाँ मुन्ना सर आप बहुत लेट हैं. हाँ we have done almost आपका like we have practiced more than 1-2 hours आपका, ठीक है. थोड़ा सा टाइम पे रहिए आप लोग, रिकॉर्डेड में देखिए बट कंज्यूम जरूर कीजिए, ठीक है.
सो दैट इज द वन. सो दिस इज ERG थ्योरी आपका, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. ठीक है, दिस वाज द आपका मैस्लोज हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, आपका मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, एंड दिस इज ERG थ्योरी आपका एल्डरफर्ड. ठीक है, एंड मैक्लेलन आपका मोटिव अचीवमेंट थ्योरी विच इज समथिंग नीड फॉर पावर. ऐसे लोग होते हैं ना जिनको पावर, जिनको लोगों को कंट्रोल करने में मजा आता, तो इनको टीम लीडर बनना चाहिए. नीड फॉर अचीवमेंट, there are some people who get motivated with the numbers, like let's say we made a sale of 10 units, then 12 unit, 15 unit, जैसे उनकी सेल बढ़ी है they feel motivated, so they should be part of the sales department और जहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं. नीड फॉर एफिलिएशन आपका HR पर्सनल, बेसिकली दोज हु जनरली आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं, भाईचारे के साथ, टीम बॉन्डिंग्स एंड ऑल, दैट जनरली कम्स अंडर दिस वन. ठीक है, नाउ ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड एडम्स इक्विटी थ्योरी. ठीक है, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और आपका एडम्स, जॉन स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, सो आपका ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, बेसिकली व्हेन यू विल स्टडी द मैनेजमेंट थ्योरीज, इट इज प्रोसेस ड्रिवन थ्योरी. ठीक है, व्हाट ड्राइव अ पर्सन्स मोटिवेशन, तो इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल दे फॉर्म एनी मोटिवेशनल प्लान इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो क्या चीजें कंसिडरेशन क्या होने चाहिए उनके ऊपर. तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी 3 एरियाज आपका, इंस्ट्रूमेंटलिटी आपका, देन वी हैव सॉरी आपका एक्सपेक्टेशंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड आपका वैलेंस. दीज आर द 3 एरियाज. इक्विटी थ्योरी आपका इनपुट एंड आउटपुट, इफ आई एम पुटिंग दिस मच ऑफ एफर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न आपका. ठीक है, तो पीपल दे हैव टेंडेंसी, दे कंपेयर विद अदर्स और दे कंपेयर विद देयर एफर्ट्स आपका, कि हम इतना अगर दे रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या दे रहा है. इफ यू आर मीटिंग विद देयर एक्सपेक्टेशंस, दे विल फील मोटिवेटेड, इफ नॉट दे विल फील डीमोटिवेटेड. इवन इफ यू आर ओवर मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस, दे विल एंटर इनटू गिल्ट एज पर आपका एडम्स. ठीक है, चलो एक बार गो थ्रू कीजिए स्टेटमेंट्स को आपका, देन विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन. व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर गाइस? योगेश सर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 क्वेश्चंस अराउंड. ठीक है, 20 मतलब लाइक ऑल द 4 मॉड्यूल. देखो यहाँ पे ना यूनिट वाइज सीक्वेंस के साथ जाइए, व्हाट आई कैन रिकमेंड यू. ठीक है, सो in between 20 to 25 marks question you will get from this particular one. ठीक है, 20 to 25 marks. ठीक है, not more than that. So 20 to 25 marks question, marks wise आपका. Instrumentality in Bloom's model denote to a cognitive evaluation of probabilistic linkage between employees' efforts and the intrinsic motivation driven solely by non-monetary rewards. No, it is monetary rewards आपका. ठीक है, like instrumentality is something, let's say you are working for 10 hours and your outcome is suppose that 10 unit. If I'm working for 12 hours and if I'm producing 2 additional unit, ठीक है, first it is expectation, can I do this? If I can do this, what rewards I'll get from the owners or the employers, that is instrumentality. कि अगर हम additional effort डाल रहे हैं, additional production करके दे रहे हैं, तो हमें reward में क्या मिल रहा है, that is the one. ठीक है, so this is, it include monetary also, so this statement is wrong. Valence is आपका comparison, valence is आपका the third stage, कि I have produced 2 more unit and in replacement I got 2000 extra. तो this मतलब वहां पे कंपैरिजन हम कर रहा होता है पर्सन कि जो मेरे एफर्ट से उसके रिलेशन में ये रिवॉर्ड सही है या नहीं है. ठीक है, दैट इज वैलेंस. वैलेंस कंपोनेंट रिफ्लेक्ट नॉट द ऑब्जेक्टिव मैग्नीट्यूड बट subjective psychological valuation of individual assigned to potential extrinsic and intrinsic outcome contingent upon the received effort to performance expectancy. True. Adams' equity theory assumed that inequity perception is a function of direct comparison of input-output ratios, and motivational responses is proportional to the cognitive dissonance experience due to perceived distributive injustice. आपका ठीक है, 100% true about the Adams theory.
इफ आई एम पुटिंग दिस मच ऑफ एफर्ट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ ब्रूम्स फ्रेमवर्क implies a deterministic causal inference between behavior and performance, eliminating the probabilistic uncertainty inherent in a complex. No, it is wrong, ठीक है। It does include आपका probabilities things and all, ठीक है। Statement 5, equity restoration strategies in Adams theory include altering one's reference comparison groups cognitively, modification personal job input or output. नहीं ऐसा नहीं है, you have to align with the things, there should be a clear cut, if you are putting this much there should be a clear cut company's policies to maintain this equity आपका, ठीक है कि if a person at clerical job, so this will be the range of salary, and if they produce this much additional they'll get this much of additional amounts, ठीक है। not आपका कि आप उसके हिसाब से प्रोफाइल ही चेंज कर दो। The expectancy model integrate the tripartite construct of expectancy, instrumentality and valence into a multiplicative motivational force sequence where absence or zero value of any single component nullify overall motivation 100% true आपका, ठीक है। So 236 means option B should be right answer for this particular one, A आपका, ठीक है। अच्छा ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नॉट, अच्छा ओके इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। आंसर सही है हमारे, बट इट इज आपका इनकरेक्ट, हाँ नॉट करेक्ट, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इन नॉट करेक्ट आपका 1 4 मतलब 1 4 एंड 5 आर इनकरेक्ट, ठीक है। करेक्ट आपका 236। तो व्हेन इट कम्स टू द आपका एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वी हैव 3 स्टेजेस। if can I put this much of additional efforts or can I perform this particular things and all, ठीक है। then instrumentality आपका, ठीक है। so if I perform what reward I'll get। third stage आपका valence, the reward I got from the employees that is equal to my efforts, it is less or high, that is आपका expectancy और Bloom's expectancy theory आपका। this is very very important one, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखें। then when it comes to the equity theory, so what I put in my job and what I get from my job, people they have a tendency to compare things, ठीक है। if they found there is a balance, well and good, if there is a imbalance that things basically demotivate them, right? or like let's say if we have we are getting over, people they entered into guilt as per Adams Stacey theory, ठीक है। let's say if I'm putting my efforts for 1 lakh and I'm getting 5 lakh, तो after some time that person will enter into guilt कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा मिला, so I should increase my efforts, ऐसा वाला चीज़ आता है, ठीक है। एंड अगर अंडर वैल्यूड है तो वो तो सीधा डिमोटिवेशन है कि लाइक इफ आई एम पुटिंग फॉर 1 lakh एफर्ट्स एंड आई एम गेटिंग 10,000, ठीक है, दैट इज अंडर वैल्यूड, ठीक है, दैट इज जनरली कम्स अंडर दिस, ठीक है।